Good afternoon. Have you done the calculations? Good afternoon, everyone. हाँ सर, आपने कैलकुलेशन किए हैं क्या? वॉट एवर वी डिस्कस्ड इन द लास्ट प्रैक्टिकल क्लास. So sir, do you face any difficulty in those calculation? Have you used computers? Sorry, Microsoft Excel for that? आपने एक्सेल पे कैलकुलेशन किए, ग्राफ निकाले हैं क्या? So shall we start, sir? Chalo. So we'll start the class. I will share the screen with you. दो मिनट अभी इसको अंदर डाल लेते हैं. हाँ. So in the last class we have seen that पिछले क्लास में सर हमने ये देखा कि व्हीकल का, this was our experiment number 3 to determine the maximum speed of the vehicle, and I hope that you have done the calculation for your vehicle. So this is the total theory which we discussed, and I asked you to draw the graph for transmission efficiency of 100%, transmission efficiency of 97%, then transmission efficiency of 95%. Okay, there I ask you that you please try to check the RPM required for the maximum speed in the first gear, second gear. So there, see at the rated RPM, how much is the speed of the vehicle you got for the transmission efficiency, and then you might have noticed the change. So today we are going to study the next practical, which will require the background. Device not connected. क्यों भाई, क्या हुआ? एक मिनट. भाई ठीक है ना? हाँ. So now today we'll study the gear shift pattern and the effect of transmission efficiency on vehicle performance. Okay, so this is your A lab number 4. Okay, so
experiment number 4. What is aim? Aim is to study gear shift pattern, and effect of transmission efficiency. Efficiency on vehicle performance. So what is the theory related to this experiment is the gear shift speed has effect on vehicle performance in terms of fuel consumption. The gear shift speed has effect on the performance of vehicle in terms of fuel consumption. This you will come to know whatever I have written. The gear shift speed has the effect on the performance of vehicle in terms of fuel consumption, because what is going to happen if there is let us say the transmission efficiency is low. So for achieving, let us say you are changing the gear from second to third at the speed of, let us say, 35 or 30, then in that case, to achieve the same 30 kilometer per hour of speed, you will have to pump more amount of the fuel into the engine combustion chamber, because the transmission efficiency will shift the RPM from lower side to higher side. So that is how your fuel consumption goes down. The transmission efficiency affects, the next sentence will explain this, the transmission efficiency affects the engine RPM for shifting of gears. Okay. So we say that in previous experiment, the graphs are plotted. The graphs are plotted for maximum vehicle speed versus engine RPM for transmission efficiency of 100%, then 97%, and then 95%. Okay, so here we are going to study how the gear shift pattern is to be plotted, and exactly how the gear, when we change the gear, what exactly happens. Before that, you will be if you note the gear shift lever, then so generally you will find that this is the top portion of the gear shift lever. Generally you may find that this is the
First gear is here. This is second gear. This is, you can say, third gear and fourth gear. Then here it is fifth gear, and here it is reverse. So gear number 1, gear number 2, gear number 3, gear number 4, gear number 5, and this is reverse. In some vehicles you may find that wherever there is a, you can say, 6 gears are there, then the first one is basically your reverse gear, then 1, 2, 3, 4 and 5 and 6. So this is basically the position of gear shift lever in the vehicle. So this is, maybe this is 5 forward, 1 reverse, this is 6 forward, 1 reverse gear. So usually this is the gear shifting pattern in the gear shift position in vehicle. So 5 forward, 1 reverse, then 6 forward, 1 reverse. Here please note that from when you shift, so let us say shifting from, I'll write down, okay, first gear to second gear, what is the gear shift speed? सर आप सेकंड गियर में कब चेंज होते हैं? फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में when do you change the gear when you drive the vehicle? Do you have any idea, or have you find out the gear shift speed for your particular kind of vehicle? So first से second just before it reaches 20 kilometers. Okay, 15 से 20, then 20 kilometer. Okay, and let us say that this is 1 kilometer per hour kmph to usually, let us say, 15 kmph. I am giving you the general value. This value may change for your kind of vehicle. Okay, so sometimes you can have 10 also. Then from second gear to third gear, at what speed we shift? Second to third, when you drive the vehicle, so it is almost 15 kilometer per hour to, let us say, this you shift to then 30 kilometer per hour. This speed I am, whatever speed I am writing here, please understand that those people who do not drive the four-wheeler, for them, basically when you shift, see, when you move the forward, you put the vehicle in the first gear, then you drive the vehicle in the first gear, then you realize that you don't require that much torque. Then almost at the time when the vehicle reaches to 15 to 20 kilometers per hour speed, you feel that you are having excess amount of torque, which is not the requirement, because once you start, then the torque requirement goes down. Then you shift the gear shift lever. So that is the speed. That means from the first gear, see, 0 to the first gear, you will be shifting when you starting from 0. Actually it should be 0 kilometer per hour to 15 kilometer per hour. ये रेंज में आप ये इसमें, in this you drive the vehicle from, let us say, in first gear, and then you shift to second gear. Okay, that means ये 15 किलोमीटर में आप second gear में shift हो जाते हो. Then second gear से third gear में आप 30 किलोमीटर की स्पीड पे almost shift हो जाते हो. Then from third gear to fourth gear आप कब shift होंगे सर? Almost ये 30 kmph से almost you shift to, let us say, 50 to 55 kilometer per hour. These values, they are for
general information. Then from fourth to fifth gear, you shift almost from 55 kmph to, let us say, 65 kmph तक के, and then from fifth gear onwards you drive above 65 kilometer per hour. So here the torque value is the least, here the torque value is maximum. Okay, now if I have to show, now please understand, see, Manish, these values 45 to 50, 10, all those values, these values, they are general gear shift speeds. Please note that these are general gear shifting speed. Okay, so exactly what is happening when you will be shifting the gear. तो सर अभी मान लो कि ये आपका ग्राफ है, थोड़ा सा अभी इसे समझ लो, ये प्रैक्टिकल का, ये है क्रूशियल पार्ट, ये आपको समझना जरूरी है। तो सर ये आपके पास ये आइडल स्पीड है, ये आइडल स्पीड है, ये रेटेड है, ठीक है, ये मान लो यहां, तो सर हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है ये है आपका व्हीकल स्पीड वाला ग्राफ है। सो वॉट एवर ग्राफ वी हैव ड्रॉन द ग्राफ लाइक दिस। एक मिनट जस्ट समझ लो सर कि मैं आपको थोड़ा सा, ये है सर फर्स्ट गियर का ग्राफ है आपका, ठीक है, एंड द अदर कलर लाइन आई विल show you the blue color line is, understand that this is basically second gear का ग्राफ है। Now let us take one point. This is for the sake of understanding. Let us say that you started here, you are moving along this line and you reach here. And let us say that this speed is 15 kmph, ठीक है, आप अभी यहाँ पे हो, फर्स्ट गियर पे ड्राइव कर रहे हो। नाउ यू रीच्ड हियर एंड द स्पीड इज, लेट अस से 15 है। नाउ यू हैव टू शिफ्ट टू द सेकंड गियर। सो हाउ डू यू शिफ्ट? तो सर कैसे करेंगे, अभी आप सेकंड गियर में कैसे शिफ्ट करोगे ये मुझे बताइए। Sir, I will draw the, you can say, different tracks by which you can shift. तो सर अभी चलो ये ब्लैक वाला कलर से मैं बता देता हूँ। The first one is you may shift like this. Okay, let us say that this is one way of shifting. The other way of shifting, I will show you by magenta color. The other way of shifting is vertically upwards. You may say that this is the second path. Or is there any path in your opinion, sir? Please now let me know. तो सर अभी कैसे शिफ्ट करेंगे? आपको तो सेकंड गियर पे जाना है, सो सेकंड गियर पे जाएंगे तो हाउ इज
going to happen. Perpendicular, okay. Any other thing, sir? सर प्लीज थिंक. सर सब लोगों को ये मैं बोल रहा हूं, कुछ गिने चुने लोग ही आंसर दे रहे हैं. सो आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. स्पीड रिमेन्स सेम, आरपीएम डिक्रीजेस, thus horizontal. Okay, Saurabh is saying horizontal. One, as we apply clutch, ROM decreases. What is ROM, sir? RPM decreases. Okay, RPM decreases. Satya is saying, okay, Satya Charan, ठीक है. Somebody is saying that from path 1 you can jump. Backline, Devesh is saying backline. Backline means, what do you mean, Deven sir? Devesh sir? Black line, okay. Horizontal to its an initial. Okay, Manish is saying this. Agreed. So what do you say, sir? What will we now? We will discuss logically that which should be the way. Sir, what will happen if you go by part 1? The vehicle will suddenly jump. Do you agree? Because you are, let us say that this is the speed. This speed, if you plot here, this is definitely more than 15. So if you jump suddenly, how we can jump suddenly in a second from 15 kilometer to, let us say, 20 kilometers for that matter, 20 kilometers per hour? Sir, ye path 1 is not possible. On the similar line, the path 2 is also not possible because it is still higher. So if you cannot follow path 1 and path 2. What you have to do, you have to move to the left side such that you will cross somewhere the second gear line. Okay, so the correct path of shifting the gear will be, you will have to trace back, as we will have to follow this path wherever it touches the second gear position, and then you accelerate and move here. So this becomes your logical way. All these things happen when you press the clutch pedal. तो ये सर कैसा है आपको ये लाइन पे? नाउ यू आर ट्रैवलिंग ऑन दिस लाइन, ये फर्स्ट गियर के लाइन पे आप जाएंगे. नाउ यू फील दैट यू नीड टू शिफ्ट द गियर. फ्रॉम हियर यू अप्लाई द क्लच, इट विल कम डाउन. The engine speed will come down because naturally you will not be accelerating the engine. The engine speed will come down. Then again, even the speed in gearbox will also come down. Then again you accelerate. Once you touch it here and shift the gear to the second level, then you will be moving further. So this is how the actual gear shifting pattern happens in the vehicle. So now if I have to draw this graph for the complete 4 gear, so I will draw that graph. So shall I shift to the next page? Just tell me. सर नेक्स्ट पेज में जाए क्या? आपको ये समझ में आया क्या? तो सर अभी अपन पूरा जो गियर शिफ्ट पैटर्न है वो समझ के देखते हैं सर, पूरा ड्रॉ करके देखते हैं. Though it may not be to the scale, but I will try to draw and show you how the gear shifting in the vehicle happens and how to reach the top or the maximum gear speed and exactly what you have to do in the practical. That is why I said that we will require the graphs when we will be discussing this. So let us say that कि थोड़ी सी बड़ी फिगर निकालता हूं यहाँ पे. मुझे थोड़ा स्लोप भी एडजस्ट करना पड़ेगा. सो फॉर दैट मैटर, ये सर मेरा ये है आइडल आरपीएम है, एंड लेट अस सी दैट दिस इज द रेटेड आरपीएम. ओके, तो सर मैं ये करता हूँ यहाँ से, आई विल ड्रॉ दिस.
this is second gear, third gear. सर आपके ग्राफ ऐसे ही आए कि थोड़े से अलग आए? Fourth. So have you got the nature of the graph which I am drawing? So first gear, then this is second gear, good, third gear and fourth gear. मैं ये 4 gear का. So then this is on this axis you have the vehicle speed in kmph. ठीक है. तो सर चलो अभी ग्राफ प्लॉट करके मैं बताता हूं कि ये कैसे, अभी पूरा सीन ये कैसे दिखेगा. चलो गुड सर. हाउ मेनी ऑफ यू हैव ड्रॉन दी ग्राफ सर? कितने ग्रुप ने सर, सबने ड्रॉ किए हैं सर ये ग्राफ फॉर देयर काइंड ऑफ व्हीकल? See, please just don't say yes because I may ask you to submit the 4 practicals at any point of time. So please be ready. So जिन्होंने नहीं किया है काम सर वो कृपा करके काम करना शुरू कर दे. अदरवाइज मैं आपको समय नहीं दूंगा सर. ये आपकी एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं. तो मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं. So सर चलो ये पहले अभी बात कर लेते. तो सर यहां से हम लोग अभी रेड कलर से ये मैं शिफ्टिंग बता रहा हूं. तो सर यहां तक के जाएंगे. नाउ विल गो हियर, देन विल कम बैक हियर. तो यहां जाने से फिर देन बाद में आई विल शिफ्ट इट हियर, then we'll come back here, then we'll trace, we'll go here, then again come back, again come back horizontally, and then we'll move further. So this is going to be our path as far as gear shifting is concerned. तो सर मान लो कि यहां आप फर्स्ट गियर में थे, यहां आप सेकंड गियर में थे, और आई विल से दैट कि यहाँ ये जो पूरा रीजन है 1 to 1 ये शिफ्टिंग का रहेगा, 1 to 2 शिफ्टिंग का रहेगा. So I will say this is the graph of the plot 1 to 1, this is 2 to 2, this is 3 to 3 में आप इतने देर तक के थे, then 4 and above. Okay, so now respectively you will match this speed. कि ये मान लो आपका फर्स्ट गियर शिफ्ट है, so you will note this RPM, ये any जितना रहेगा. ये मान लो any 10 है अपने इसमें या 15 पे आपने चेंज किया. हमने क्या लिया था सर गियर शिफ्टिंग स्पीड? ये हमने ली थी कि 15 लिया था. सो NE 15 हो गया ये. देन सेकंड गियर वाला अपना कौन सा हुआ सर स्पीड? ये हुआ सेकंड से थर्ड वाला कौन सा था सर अपना? 30 थी, 30 दिया हुआ था. सो दिस इज NE 30. देखो देन ये जो स्पीड है आप किन स्पीड से भागे? ये NE ये हो गया आपका 30 हो गया. देन 30 से आप 55 पे चेंज हो गए, ये 55 पे चेंज हो गए. सो दिस इज मैक्सिमम यू हैव ड्रिवन. एंड देन आफ्टर दैट योर NE 65. सो NE 65 कहीं यहाँ ले लेते हैं. तो सर ये NE आपका हो गया ये 65 kmph में. सो this is basically the red color here, whatever we are drawing here, that shows the gear shifting pattern for your kind of vehicle. This is for transmission efficiency of 100%.
So similarly, you have to do it for transmission efficiency of 95% and transmission efficiency of 97%. So sir, आपके पास ऐसे 3 ग्राफ आएंगे. Sir, speed is on y-axis. Yes sir, speed is on y-axis means which? This is vehicle speed. This is the in RPM of engine. NE लिखा है सर मैंने. ये है vehicle speed in kilometer per hour. सर ये तो सही है सर, स्पीड इज ऑन वाई एक्सिस. सौरभ, मैंने स्पीड जो दिया है वो सर वाई एक्सिस पे व्हीकल का स्पीड है. ओके, सो सर ये आपको ये जो स्टेयरकेस पैटर्न है, सो आई विल नोट हियर द red color zigzag lines indicates the gear shift pattern. Okay, सर किसी को समझ में नहीं आया क्या, ये बताइए सर. इसमें आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आया ये बताइए. द इंजन आरपीएम इज ऑन द एक्स एक्सिस, द व्हीकल स्पीड इज ऑन द वाई एक्सिस. सो नाउ data to be extracted from graph. ओके, सो अभी आपको एक टेबल बनाना है. ये सीरियल नंबर, देन कौन से गियर में गाड़ी है, देन गियर शिफ्ट स्पीड आपने कब किया, यानी 1 से 2 में कब जाने वाले हो. व्हेन यू शिफ्टेड दैट यू नीड टू कलेक्ट द डेटा. यानी ये इससे आप या रीडिंग से भी आप कलेक्ट कर सकते हो. ग्राफ से कलेक्ट करो या इससे कलेक्ट करो, लेकिन ग्राफ प्लॉट करो. ये आपका NE मान लो इसमें 15 कितने आरपीएम पे था, देन NE 30 आपने कितने आरपीएम, NE 30 आपको कब मिला, देन NE 50 आपको कब मिला इंजन आरपीएम. ओके, देन NE 65 कब मिला, कितने इंजन आरपीएम पे आपको मिला. तो सर ये यहां से मैंने आपको बता दिया है कि कैसे एक्सट्रैक्ट करना है. सो NE 50, NE 60, NE 65, whatever these values you have to put it for transmission efficiency of 100%, then transmission efficiency of 97% और transmission efficiency of 95%. तो एक ही डिब्बे में सर सब वैल्यूज आ जाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4. देन आपका ये जो है कि डिफरेंस इन ट्रांसमिशन, डिफरेंस इन आरपीएम निकालना पड़ेगा. सो डिफरेंस इन आरपीएम निकालना पड़ेगा कि भाई सेम इस पे. ओके, नाउ देन फाइंड द corresponding difference. So delta n just gear shift के लिए कि NE 15 में 95% के लिए कितना था, माइनस NE 15 100% के लिए कितना है. दूसरा ये हो गया आपका 95% एफिशिएंसी के लिए. सेकंड आपको डेल्टा n निकालना है कि N15 ये 97% के लिए कितना था और NE 15 100% के लिए कितना है. तो ये हो गया आपका 97% ट्रांसमिशन एफिशिएंसी के लिए. तो सर ऐसा एक आप
टेबल बना लीजिए गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4 के लिए। तो आपको सर ये भी पता चलेगा कि भाई कि कितने आपको वैल्यू यानी डेल्टा कितना आता है। तो सो यू मे से दैट ये अगर आपने ऐसा यहाँ पे भी आपने ऐसा ये टेबल बनाया कि 95% के लिए और 90% के लिए, कि मान लो चलो मैं यहाँ एक लिख के देता हूं कि यहाँ एक एडिशनल आप कॉलम कर लो। तो यही टेबल में आप मान लो कि डेल्टा n फॉर 95 nt इज इक्वल टू 95% और डेल्टा n nt इज इक्वल टू 97%। तो ये कहां से निकालना है सर? ये वैल्यू यहाँ पे जाएगी सर। सर हमको देखना है सर, लॉजिक इज वेरी सिंपल। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमको ये फाइंड आउट करना है कि पहले गियर शिफ्ट मैं जब करता था एट दैट टाइम जब 100% एफिशिएंसी थी तो इंजन आरपीएम कितना था। मान लो मैं 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे आई एम चेंजिंग फ्रॉम फर्स्ट गियर टू सेकेंड गियर। So at that time, what was the engine RPM? Naturally, in 100% transmission efficiency, the engine RPM in first gear will be less compared to the engine RPM at the same speed for the 97% efficiency or 95% efficiency. So that additional delta n, which is going to be positive, that is the effect of the transmission efficiency. Are you getting it? So the transmission efficiency is directly affecting the engine RPMs for the same vehicle speed. This adversely affect the performance. Not only performance, it is going to adversely affect the emissions which are coming out from the vehicle. Because see, पहले आपको मान लो just a simple example. Previously, when there was no transmission efficiency, or you can say transmission efficiency of 100%, at that time, for 15 kilometer, just an example, I am telling you, just an example, okay. So transmission efficiency when it was 100%, so for 15 kilometer per hour, I used, let us say that engine RPM used to be let us say 3000 RPM. Okay, then when I change transmission efficiency to 97%, then for 15 kilometer per hour my engine RPM naturally will be more than 3000. Let us say it is 3100 RPM. Okay, that means I am putting delta n for 15, delta n 3100 minus 3000. That means I am putting, I need to put 100 RPM more in order to achieve the same 15 kilometer per hour speed. And where from I am going to get this 100 RPM? This 100 RPM will be at the cost of the additional fuel which I am burning in the combustion chamber of the engine. Sir, समझ में आ रही क्या बात? Sir, please let me know. Are you getting it? Okay. So we wanted to find out this. So conclusion is that to achieve this 100 RPM, I have to burn more amount of fuel because the transmission efficiency is 97%. So if there is a slippage, there is a problem in the clutch plate, the transmission efficiency goes down, and that is going, how that is getting affected or percolated, it is going to get affected in the gear shift pattern. Here we learn that how the gears are shifted, how to draw the gear shift pattern, how to find out the maximum RPM, maximum speed of the vehicle, and what is the effect on the let us say engine performance. Because if you burn more amount of fuel to compensate for this 100 RPM, that means you are adversely affecting the fuel efficiency of the vehicle. So, and because you burn more amount of fuel, the more emissions are there. So you are in a way polluting the environment, which otherwise you would have got
Without doing that, the same thing happens if you put the leg on the clutch pedal and if you drive the vehicle in half clutch, because for achieving the same RPM, then if you are putting the putting the leg on the clutch pedal, that means you are slightly disengaging the clutch, and if you are disengaging the clutch, then the 100% power transmission will not be there. So therefore they say, therefore whenever people say that कि ये driver ने अगर the fuel efficiency is also dependent on the habit of driving. For some people, if they are driving, they are following, they understand this correctly, then they will not put the foot on the clutch pedal when they are driving on the highway. Okay, they will allow the clutch to be fully engaged. Whenever they want to control the speed, then and then only they will apply or they will put the leg on the clutch pedal. So half clutch driving या partial clutch engagement में अगर drive किया vehicle, there are two losses. One is the vehicle will not give the fuel efficiency. The second one is you are going to create the relative motion between the clutch plate, and if there is a relative motion between clutch plate, there are chances that there is more amount of heat generation in the clutch. At times the clutch may burn. So such kind of things happens. Then clutch failure happens because of such kind of driving habit, and moreover that we are polluting the environment. So what is the conclusion? So what you have to do, you have to prepare the table, you have to prepare these kinds of graph and find out the delta N required for gear shifting. गियर शिफ्टिंग में आप 100% इफिशियंसी के साथ करते थे तो कितना इंजन आरपीएम रहता था जब आप गियर शिफ्ट करते थे? नाउ अगर अभी 97% आया तो अभी कितना आरपीएम आपको एडिशनल लग रहा है? 97 at 95. And finally you have to write down the conclusion. The transmission efficiency directly affects transmission efficiency directly affects the engine RPM for same vehicle speed. Secondly, is adversely affect the vehicle performance and emissions. Okay. सर दूसरी चीज भी याद रखना, the same thing, there can be a problem if you are operating the clutch by mechanical means. If there is some play in the linkages of the clutch operating mechanism, then also such kind of thing can happen. At times you may feel that when you drive the vehicle, or if you are co-passenger, you are sitting in the vehicle, whenever the driver is changing the gear and you feel a sudden jerk, then and then only please understand that that vehicle is having problem with the clutch. As a result, there is a sudden engagement and sudden disengagement. So that means the clutch plate friction material is going to have certain problems, and that vehicle definitely will not give you the, you can say, definitely will not give you the better fuel economy and better ride. Okay. So over from my side, if you have any confusion or any question, please do ask. Otherwise, it is over from my side. सर किसी को कुछ डिफिकल्टी प्रॉब्लम कुछ है क्या सर? से यस नो इन दी चैट बॉक्स कि अगर नहीं है तो ठीक है. तो ये आपको इन 4 प्रैक्टिकल अभी आपको करने हैं. द फर्स्ट प्रैक्टिकल वाज स्पेसिफिकेशन, सेकंड स्टीयरिंग सिस्टम, थर्ड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल, फोर्थ गियर शिफ्ट पैटर्न,
पांचवा हम लोग ब्रेक्स पे करेंगे, बिकॉज वी आर कवरिंग ब्रेक्स इन दी, यू कैन से, थियरी. सो देन गियर बॉक्स इनपुट शाफ्ट कैसे डिजाइन करने का वो भी करेंगे. सर अभी ये आ जाने के बाद, सर इन टेबल गियर शिफ्ट स्पीड कॉलम विच वैल्यूज विल कम. सो गियर शिफ्ट स्पीड में सर ये वैल्यू आएंगी ना सर, कि आपने कब गियर चेंज किया. तो अरे यार एक सेकंड सर, यहाँ लिखी है ना सर, ये आपके व्हीकल के लिए ये वैल्यूज रहेंगी ना. जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना यहाँ जनरल गियर शिफ्ट स्पीड, तो यहाँ आपके व्हीकल के लिए ढूंढो ना सर कि कौन सा है. तो प्रद्युम्न गॉट इट. ये जो मैं सर ये अभी ये कर्सर से बता रहा हूं, दोज वैल्यूज विल कम हियर फॉर योर व्हीकल. ये तो सर मैंने जनरल दिया है, लेकिन आप इंटरनेट पे ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा. टाटा के व्हीकल्स का वैल्यू मिल जाएगा सर. टाटा की गाड़ियों की वैल्यू मिल जाएगी, बाकी की भी ढूंढ लो सर, मिल जाएगी. अगर नहीं मिला तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू ले सकते हैं, बट डोंट डोंट टेक दीज वैल्यूज एज इट इज. थोड़ा सा सर्च करो सर. जिनको नहीं मिलता है दे कैन यूज दीज वैल्यूज. अदरवाइज सर आपको मजा नहीं आएगा. आप जो प्रैक्टिकल करेंगे, अगर मैंने ये सब दीज आर दी जनरल वैल्यूज व्हिच आई एम टेलिंग यू, दोज हु विल, जिनको भी नहीं मिलेगा दे कैन यूज दीज वैल्यूज. बट यूजुअली ये जो गियर शिफ्ट वैल्यू है, ये दो चार अगर आपके व्हीकल स्पेसिफिक मिल जाते हैं तो मिल जाएंगे सर. व्हीकल स्पेसिफिक मिलते हैं तो मजा आएगा आपको सब कैलकुलेशन करने में. यस सर, एनी इशू अपार्ट फ्रॉम दिस. सर आई हैव गिवन यू द लिबर्टी. तो सर कृपा करके आप इसकी फाइल बनाइए. एंड प्लीज नोट दैट एवरी स्टूडेंट हैज टू मेक द फाइल. कॉमन फाइल इज नॉट एक्सेप्टेबल. यानी आपने जो ग्रुप में 4 लोगों ने किया है, तो 4 ही लोग एक ही फाइल सबमिट करेंगे. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. सिर्फ आपका जो कंप्यूटर वाला जो टेबल एंड अदर थिंग है, वही सिर्फ आपका प्रिंटेड रहेगा, या ग्राफ ही प्रिंटेड मैं अलाउ करूंगा, लेकिन बाकी जर्नल सर मैं नहीं अलाउ करूंगा. थोड़ा सा आप हैंड रिटन भी काम कीजिए, because we have to keep the record that every student has done the practical and submitted the journal. So it is required for that particular purpose. Unless and until you submit the soft copy with your name, with your handwriting, your marks on the journal will not be given. तो सर ये please keep a note of it. तो सर सबको जर्नल बनाना जरूरी है. डोंट रिलाई ऑन योर फ्रेंड कि वो मेरे को कॉपी भेज देगा, मैं जैसे कि वैसा उसका सिर्फ नाम चेंज करके भेज दूंगा. डोंट डू दैट, बिकॉज इट हैज टू बी केप्ट एज अ रिकॉर्ड. फाइनली हमको ये प्रिंट आउट करके भी अगर मांगा तो देना पड़ता है सैंपल जर्नल के पेजेस. सो प्लीज डोंट डू दैट. सो इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? If there are no questions, then we'll stop here. I will share you the PDF of this. सर आई विल ट्राई टू सी कि सर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे एखादा प्रैक्टिकल हम लोग ले सकते हैं क्या. राइट नाउ आई डोंट प्रॉमिस, बिकॉज वी हैव गॉट द इलेक्ट्रिक व्हीकल इन सीमेंस सेंटर. तो अगर उस पे एखादा प्रैक्टिकल अगर ले लिए तो इट विल बी गुड फॉर यू एंड मी ऑल्सो to get some idea about the electric vehicle. But right now I don't promise, but I will try my best to do that. If it is there, then आपको वो भी प्रैक्टिकल करा दूंगा मैं. चलो सर, एनी अदर? हाँ, एंड वन मोर थिंग, I have purchased the cut section model of the Scorpio. तो सर वो फेब्रुवरी की एंड तक के आने की अपेक्षा है. अगर वो आ गया कट सेक्शन मॉडल, तो स्कॉर्पियो का डीजल इंजन से लेके तो डिफरेंशियल एवरीथिंग आई विल बी एबल टू शो यू दी, एटलीस्ट फोटोग्राफ, वीडियो सब मैं बता दूंगा सर आपको. टुडे इटसेल्फ आई टॉक टू दी सप्लायर एंड आई आस्क हिम कि भाई मुझे फरवरी एंड तक के तो भी तू जल्दी भेज करके. अगर वो आ गया तो सर कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन भी हो जाएगा आपको. तो सर पूरा सिस्टम आपको देखने मिलेगा. अगर आप कॉलेज में रहते थे
So I would have opened the bonnet and will have shown you the different parts in the engine compartment. वो भी देखने में मजा आता है, so that you will understand कि exactly हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो कैसे कैसे vehicle में implement होता है क्या. So I have got lot of things regarding the automobile, so don't worry. जितना भी हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर अपने को आखिरी में कुछ समय मिला, देन आई विल शो यू सम एक्सेलेंट वीडियोस ऑन द टर्बोचार्जर की कैसे काम करता है. देन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का भी वीडियो बताऊंगा. सो बहुत सारे वीडियोस है. इट इज, सी, आई एम नॉट रेस्ट्रिक्टिंग द डिस्कशन ऑन द ऑटोमोबाइल ओनली रिलेटेड टू द सिलेबस. इट हैज टू बी द कंप्लीट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग. Whatever I know, I will try to share with you so that you will not face any difficulty when you join any company or whenever you go for the purchasing of the vehicle. You will understand the technology quite well. So over from my side, I will stop sharing. Yeah. सर, इस सेम में कॉलेज चालू होगा क्या? यश, होप फॉर द बेस्ट. मुझे भी मालूम नहीं सर. मैं आपके ये क्वेश्चन का मेरे पास अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट हैव आंसर फॉर दैट, बट होपफुली इट शुड स्टार्ट, बिकॉज वो थोड़ा सा हमारा भी बर्डन जो है वो कम कर देगा सर. It is not that you are only loaded. We have also become the software engineer and it becomes very odd to speak to a machine. तो सर थोड़ा सा हमें भी अटपटा लगता है प्रैक्टिकल लेते समय या फिर थियरी का बात डिस्कस करते समय. सिर्फ प्रॉब्लम ये होगा कि आप लोगों की जो नींद या बाकी पैरेलल प्रोसेसिंग वाली जो एक्टिविटी है वो बंद हो जाएगी अगर कॉलेज शुरू हुआ तो. ठीक है. सो एनी अदर क्वेश्चन सर? So if there are no questions, sir. हाँ बोलो सर. Sir, theoretically we can change one gear to other for different points. So should we take 4 to 5 points or as we can? सर थियोरेटिकली गियर चेंज करना नहीं सर. थियोरेटिकली हाँ आप कर सकते हो ना जब भी आपको चाहे, बट अभी मैक्सिमम गियर शिफ्ट वाला मैंने बताया है स्पीड. ऐसा नहीं है कि आपको 15 पे ही गियर चेंज करना है. आप 10 पे भी कर सकते हो, आप 12 पे कर सकते हो, आप 13 पे भी कर सकते हो. हाँ बोलो सौरभ. Yes, means 15 is the limit, मतलब last limit. नो नो, ऐसा लिमिट नहीं है सर. मैंने वो आपको एग्जांपल दिया. इफ यू गो फॉर दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल, दे हैव डिफरेंट डिफरेंट गियर शिफ्ट वैल्यू. कि आपको बोलेंगे कि भाई मैक्सिमम फर्स्ट गियर में आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक के चलाओ, फिर ये देन यू शिफ्ट टू सेकंड गियर. Okay. सर इट इज बेसिकली दी डिजाइनर गियर बॉक्स आपके व्हीकल के लिए कैसे डिजाइन किया है सौरभ, इसके ऊपर सब वो डिपेंड है. कुछ व्हीकल वाले बोलेंगे कि भाई आप 15 तक के चला सकते हो, 20 तक के चला सकते हो फर्स्ट गियर में. कुछ बोलेंगे कि आप 22 तक के चलाइए. बट इन दैट केस यू आर अननेसेसरीली गेटिंग एडिशनल टॉर्क विच यू डोंट रिक्वायर. Yes, sir. करेक्ट. यानी फिर सिर्फ फ्यूल जलाने में मतलब क्या है कि आप मान लो कि अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो और गाड़ी सेकंड गियर में ही चला रहे हो या फर्स्ट गियर में ही आप 40 की स्पीड आती है, फर्स्ट गियर में 40 की स्पीड, लेकिन आप फर्स्ट गियर में 40 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे क्या रोड पे? नहीं सर, फ्यूल आप तो बहुत ज्यादा फ्यूल जलाएंगे ना, बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ दैट. सो इट इज बेसिकली दैट इज व्हाई द ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. Whereas that is not the case with the electric vehicle. Electric vehicle की बात करो तो आपके पास क्या है कि it is going to automatically change the speed because वो कंट्रोलर लगा देंगे कि भाई मैक्सिमम इतना टॉर्क आपको मिल सकता है. इसके बाद वो कंट्रोलर ऑटोमेटिकली आपने कितना भी एक्सेलरेट करने का प्रयास किया तो इट विल चेंज द गियर. नाउ सी, recently I purchased one vehicle. In that vehicle, that's a manual transmission diesel vehicle, okay, 6 speed. So there they have given the driver's aid. तो driver's aid में क्या बोलता है वो कि जब भी स्पीड सेकंड गियर में मान लो, if I am going down to speed below let us say 25 kilometers, he is prompting the driver that please change the speed करके, otherwise it will automatically change to first gear.
Now please understand now this is the manual transmission vehicle and it is functioning as if it is an automatic transmission vehicle. Only thing he is prompting the driver ki you change the gear, reduce the speed, change the gear. So when you increase that, the message goes off from the dashboard. Okay, so these kinds of systems nowadays are there, so people are using it. Yes. Thank you, sir. Yeah. Thank you. So you can leave the meeting over from my side.